So Bismillahirrahmanirrahim, and today's lecture for the vocabulary. Number one, it is exemplify. मिसाल देना. हम इसको सेंटेंस में इस तरह से यूज करते हैं as an exemplification. So now I'm using another word to exemplify the performance of Pakistani team. The current test match is the witness. पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए करंट मैच जो है उसको मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाह रहा हूं. सो एग्जाम्पलीफाई मिसाल देना. इट इज इफेक्टिवली मुअस्सर तरीके से. सो वैक्सीन शुड बी यूज्ड इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द रूल्स. ओके, सो इसको इस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करने के. एक्सोटिक. एक्सोटिक समथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम द लोकल होम, दैट इज नॉट फ्रॉम द होम साइड. फॉर एग्जांपल, दिस डायमंड is an exotic stone. It is not found on this earth. ये exotic है, यहां से नहीं है, कहीं बाहर से आया, ये इस जमीन पे पाया नहीं जाता. मेरी बात समझ में आ रही? So exotic, that is not something from the local area, that is from outside. Even if you talk more broadly, वो इस यूनिवर्स से नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है, खला से. For an example, we use the word exotic, that is not local, that is from outside. Okay, आगे चलेगा जी. Empathy, हमदर्दी. एम्पैथी, एम्पैथिक होना चाहिए, हमें हमदर्द होना चाहिए. एम्पैथी, किसी के साथ हमदर्दी का इजहार करना. एम्बैरस, शर्मिंदा. एम्बैरस, शर्मिंदा. एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी होगी. यहां सामने लिखा हुआ है शर्मिंदगी. डिक्शनरी कहती है एम्बैरस शर्मिंदगी. इट इज नॉट लाइक दैट. एम्बैरस शर्मिंदा को कहेंगे. एम्बैरसमेंट विल बी दी शर्मिंदगी. ओके, आगे चलेगा जी. सो नाउ एंजेंडर. Engender, पैदा करना. Basically, it is not like something पैदा करना. It is here engender, to create something. Engender, to create something new that is not known to us. So when we try to create something new, we say we are going to engender a new thing. Okay, हम किसी नई चीज को produce करने के वास्ते जा रहे हैं. So normally it is engender is the word that we use for the system of gradations. So now आगे चले. एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट से निकला हुआ है. एवरेस्ट मींस द नेम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट. तो ये वहां से निकला. एक्साइटेबल, एक्साइटेड, एक्साइटेबल, एक्साइट. सो नाउ एक्साइट हम कहते हैं खुशी को. ओके, एक्साइट खुशी को. एक्साइटमेंट अगेन खुश होना, एंड एक्साइट खुश होना, एक्साइटमेंट खुशी, एंड एक्साइटेबल जिस चीज से हमें खुशी मिले, दैट इज नोन एज एक्साइटेबल. ओके, फॉर एन एग्जांपल, फुटबॉल इज एन एक्साइटेबल गेम फॉर मी. आई डेली गो टू प्ले फुटबॉल बिकॉज इट इज एन एक्साइटेबल गेम फॉर मी. सो एक्साइटेबल जिससे खुशी महसूस हो. एक्सपेंशन, फैलाव, बढ़ाना. इट इज एलिक. एलिक इज साथ में यहां पे लिखती है हिरन. एलिक यहां पे डिक्शनरी कहती है एलिक. एलिक इज अ सॉर्ट ऑफ डियर that is found in South Asia. So Alec is the name of one specified form or the type of the species of the deer. ये हिरन की खास टाइप को कहते हैं. आगे चले जी. आगे लिखा हुआ है एक्सपेट. यहाँ पे आर साइलेंट है. इट इज एक्सैसिपेट. ओके, इट इज एक्सैसिपेट. आर इज साइलेंट. ओके, एक्सैसिपेट. इट इज एक्सैसिपेट. एक्सैसिपेट, पढ़ाना. बेसिकली किसी चीज को ना, किसी चीज को इफ यू पुश समथिंग, किसी चीज को उठाना, उभार देना. फॉर एग्जांपल, दो लोग लड़ रहे हैं और एक तीसरा बंदा दरमियान में आके उनको और जोश दिला रहा है. हाँ, वाकई इसने गलत बात की, और मारो और मारो. दिस पर्सन हु इज एग्जैजुरेटिंग, जो चीजों को और उभार दे रहा है ना, उसकी इस एक्टिविटी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सैसिपेट. इज इट क्लियर नोट? यहाँ पे लिखा हुआ है पुरजोश. तो लोग समझते होंगे शायद मैंने सॉरी, बढ़ाना मींस एक्सटेंडेबल. इट इज नॉट समथिंग लाइक एक्सटेंडेबल. इट इज नॉट एक्सटेंशन. इट इज बेसिकली टू पुल सम एक्टिविटी. किसी एक्टिविटी को ज्यादा रिदम में लाना, उभार देना, बढ़ाव देना. ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज है. मोर लाइकली इट इज यूज इन द बिहेवियरल टर्म्स. एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी का इस्तेहकाक करना. एक्सप्लॉयटेटिव मीन्स कोई ऐसी चीज जिससे किसी का इस्तेहकाक होगा. तो दैट इज व्हाट नोन एज एक्सप्लॉयटेटिव. His speech was quite exploitative for the women in Pakistan. उनकी स्पीच बड़ी एक्सप्लॉयटेटिव थी खवातीन के लिए जो पाकिस्तान. ओके, सो एक्सप्लॉयटेशन से निकला है एक्सप्लॉयटेटिव. एक्सक्लूसिव, खसूसी, खास करके.
This program is exclusively designed for the females. ये खवातीन पर डिजाइन किया गया. Okay. So now earnestly, संजीदगी से, we have to take PTE on earnest basis. I am taking PTE exam earnestly to take good score in my exam. Okay. So संजीदगी से लेना. Evaluation का मतलब होता है हम किसी चीज की तशखीस करें. Evaluation से मुराद यहाँ पे है अब मापना. Basically it is evaluation in मापना के context में है. The evaluation tells us that the overall performance of teachers is very good. The evaluation tells us that the value of this house is 10 million. Clear? तो किसी चीज का अंदाजा लगाना is known as the evaluation. Equal, बराबर, and equally, बराबरी से. Okay, so equally, बराबरी से. So now excellence का मतलब होता है we can take it like in this way, that the excellent performance means outstanding performance. Excellence means something that is really extraordinarily तारीफ के काबिल. Okay, so excellence is known as the performance जिसकी तारीफ की जा सकती. Okay, so now that is known as the excellence. External, बहरूनी, existence जो चीज मौजूद होती है, तो जिस चीज का वजूद होगा, मौजूद होगी, that is known as existence. Emergent, ऐसी चीज जो यकदम से बाहर उभर के. For an example, use of solar panels in Pakistan is an emergent thing. अभी उभर रही है, अभी मेच्योरिटी को नहीं पहुंची, अभी नई है, ऊपर को आ रही है, that is known as emergent. Elaborate, explain. I am elaborating that the vocabulary is very important. The elaboration of the vocabulary will help you out in the reading exam. Okay, so इसको कहते हैं elaborate, खोल के बयान करना. Execute, execution का मतलब होता है किसी चीज का शुरू कर देना. Execute, जब तक कोई चीज डिसाइड हो जाती है लेकिन अभी उसको हम शुरू नहीं करते, तो हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, प्लान हुई. एग्जीक्यूशन मीन्स उसको चला देना, शुरू हो जाना. एमिशन कहते हैं निकलने को, इखराज. द एमिशन ऑफ द स्मोक इज हैजर्डियस फॉर द एनवायरनमेंट. माहौलियात के लिए स्मोक का एमिशन बड़ा खतरनाक है. ओके, सो नाउ आगे चले. एवापोरेट, बुखारात का बनना. Encroachment. Another pronunciation is encroachment. Okay, so encroachment or encroachment, both pronunciation is not bad. So it is encroachment. Encroachment कहते हैं तजावुजात. Okay, so now जब आप सड़क के ऊपर देखते हैं something is placed on the road, we say that it is among the encroachment. Encroachment department must be called upon ताकि वो इन रेडियो को ले जाए. Clear? तो तजावुजात तो कहते हैं encroachment. So now it is elevation. Elevate, बुलंद करना. Elevation, बुलंदी. Overall elevation of the building is very smart. जितनी हाइट है वो बड़ी खूबसूरत लगती है. So elevation का मतलब होता है बढ़ाना. Equitable, मुनसिफाना. In Pakistan, there is no equitable treatment between different segments of the society. ना इंसाफी है, बराबर सलूक नहीं किया जाता. Okay, so now अब जब हम बात यूज करते हैं equitable, inequitable is the antonym. Inequitable, ना इंसाफी और इंसाफ पसंदी, वो क्या कहलाएगा? Equitable. Next one is educational, तालीमी. It is entourage. Entourage, ये आ गया tour का word है. So it is entourage, वफ्त का जाना. Okay, जो लोग कहीं जा रहे होते हैं as a delegation, we name them as what? Entourage. Okay, जो लोग कश्मीर जा रहे हैं हम ट्रिप के लिए, so ये क्या कहलाएगा? टूर. अब जो लोग जा रहे होंगे बस के अंदर शामिल होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? entourage. The entourage is of 30 people in the bus. Clear? So now entourage. Evident, वाज़े, नजर आने वाला. It is evident that now students are learning vocabulary. Clear? It is evident. अब वो सुन रहे हैं, संजीदा है. आगे चले जी. So it is envion. Vian से निकला, ये लिखा vian. Envion. So तसव्वुर है vian. Envion, तसव्वुर की तरफ चलना. So envion, I am envion towards my destiny. मैं अपने तसव्वुर की तरफ जाना शुरू हो गया. मेरी बात समझ में आ रही है जी? So now आगे चलें जी. इसको हम नाम देते हैं, इस वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा
Entomophagy. It is entomophagy. Entomophagy, ilm hashrat. Entomophagy. It is hashrat ka ilm, okay? Something to do with the insects. That is what known as the entomophagy. Okay? It is entomophagy. Exploration. Explore karna. Talash karna. Nikalna, dhoondna is known as exploration. Elasticity. Lachak. Entrepreneur. Karobar. Entrepreneur. Karobari. Business is run by the entrepreneurs. Means karobari karobar chalata hai. So entrepreneur karobari. Enroll इंदराज करना, formation तश्कील देना. It is formidable. Formidable means जबरदस्त. It is outstanding. Formidable. Okay. तारीफ के का. It is formidable. जबरदस्त. Facilitate सहूलत मुयस्सर करना. Flinch. Flinch. उड़ना. It is not like that. वो जो flinch जिसको normally fly in air. It is flinch. Flinch is word is used in context of allow. There is an overall flinch in the smoking trend in this economy. So it is बढ़ाने के context. It is not in context of उड़ना. It is more often इसका जो बामुहावरा तर्जमा बनेगा वो फैलाव के context में. Flinch. Fingerprints that all know. Folder is that specific area in which we keep the things safe. Folder is known as a place where we keep the things for the safe custody. So now it is the vocabulary for today, and in the evening